महारानी की, की, कलयुग पावन तारण हरे कृष्ण महामंत्र की। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 45 पर आज हम चर्चा करेंगे। 44 तक हमने चर्चा कर ली है, तो सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 45। trai-guṇya-viṣayā vedā nistrai-guṇyo bhavārjuna nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān trai-guṇya-viṣayā vedā nistrai-guṇyo bhavārjuna nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān। प्रभु's माता। trai-guṇya-viṣayā वेदा nistrai-guṇyo bhavārjuna nistrai-guṇyo bhavārjuna nirvādvo nitya-sattva-stho nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān niryoga-kṣema ātmavān। trai-guṇya-viṣayā vedā trai-guṇya-viṣayā वेदा nistrai-guṇyo bhavārjuna nitya-sattva-stho nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān। nirguṇya-viṣayā nistrai-guṇyo bhavārjuna nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān। trai-guṇya-viṣayā वेदा nistrai-guṇyo bhavārjuna nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān। हरे trai-guṇya-viṣayā वेदा nistrai-guṇyo bhavārjuna nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān।
trai-guṇya-viṣayā vedā nistrai-guṇyo bhavārjuna nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān. Hare Krishna. Word to word meaning त्रैगुण्य प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित विषया विषयों में वेदा वैदिक साहित्य निस्त्रैगुण्य प्रकृति के तीनों गुणों से परे भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्व द्वैत भाव से युक्त, निर्भाव से मुक्त, सॉरी, नित्य सत्वस्थ, नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योगा-कṣema लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, ātmavān आत्मा में स्थित। अनुवाद तात्पर्य भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्ण। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय वृत्ति के क्षेत्र में से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ धर्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छुटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो वह यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 45 पर हम आ गए। लास्ट वीक हमने श्लोक क्रमांक 44 लिया था, तो 44 का एक बार छोटा रिकैप कर लेते हैं। क्या समझ में आया था? किसी को कुछ याद है? क्या क्या याद है? जो लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच रहते हैं उन्हें कभी समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। ओके, यस, ओके। समाधि का अर्थ स्थिर रहना, कांस्टेंट। State of being satisfied. and also there was one more definition given. Fixed mind. State of being satisfied, fixed mind, and mind listening exactly to the soul, right? Soul. Soul where So that's what the whatever is the mind in sync with the soul's desire, right? Mind in sync with the soul's desire. And that's what we took the example of Sam and Adi also, is the drama, right? So yeah. And what else? Important words were what? Bhoga and Aishwarya. Bhoga and Aishwarya. Bhoga and Aishwarya, because we ended up with 42 and 43 with the Bhoga Aishwarya Gatim Prati, where we proceed towards Bhoga and Aishwarya, and that same Bhoga Aishwarya makes us a lot of attachment in this material world. Okay, so Bhoga Aishwarya Prasaktanam meaning, what did we hear? What was the meaning of it? Overly attached. Deep attachment. Not too much attachment, we can say. Attachment is fine, but too much attachment. So too much attachment to Bhoga and Aishwarya leads us to a lot of, we try to fulfill those desires and we again fall into karma bandhana. So this Bhoga and Aishwarya Prasaktanam people then do not get single pointed resolute determination, right? And which is required for Buddhi Yoga. So Vyavasayatmika Buddhi, that is the reason people do not. So we already described in 42 and 43, we described 5 types of people who are men of small intelligence, who will not get who cannot get single resolute determination, focused determination. And also these 4 circumstances into which these 5 people fall, that is flowery words of the Vedas, Veda Vadarata, and many things. 4 types of things for which they do not get this single pointed resolute determination. So we know, right, we are going from the point of Bahushaka to single point, right? Vyavasayatmika, Avyavasayatmika Buddhi to Vyavasayatmika Buddhi. So from 41 to 53, this is the journey. And 42, 43 we had done last year, and 44 is also related to this. And now we are coming to 45, which includes this section. 1, 2, 3. Okay. So that is why I gave you this diagram, which which we have to follow till 53, because this is the whole journey through which it is taking us. Anything else? We took examples of this also, no? Bagla and Bagla. हमने एग्जाम्पल लिया था कि कीट और पतंगा, बगला और हंस, है ना, जो अटैचमेंट से रिलेटेड, कि हाउ डीप अटैचमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग्स हैव, बगला भगत, उसको मच्छी खाने में अटैचमेंट है, हंस उड़ के अपने मानसरोवर जा रहा था, और फिर भी जो है सो वो बोलता मानसरोवर में मछलियां मिलेगी क्या? बोलते नहीं, मछलियां नहीं मिलेगी, वहां का पानी बहुत शुद्ध है। तो बोलते फिर मैं वहां के क्या करूंगा, है ना। वैसे ही हमारे लोग हैं जो पीने पिलाने वाले लोग हैं, खाने खिलाने वाले लोग हैं, बोलते हैं भाई मैं तो यहाँ पीऊंगा, वो पाप लगेगा। बोले तो बोले तेरे को पाप लगेगा तो क्या वो जो सर्व कर रहा है उसको भी लगेगा, ये जो कर रहा है उसको भी लगेगा। तो बोले ये सबको पाप लगेगा और सब नर्क जाएंगे, तो मैं भी नर्क ही जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगा, है ना। तो लोग नंदन गार्डन में इतने अटैच हो जाते हैं कि सभी लोग अपने साथियों के साथ में वहीं जाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार जो है भोग और ऐश्वर्य के अंदर वो लोग अपने कर्म बंधन को प्राप्त करते हैं। धृतराष्ट्र का भी हमने एग्जाम्पल समझा था, है ना। धृतराष्ट्र का भी हमने एग्जाम्पल समझा था कि भाई उसको जब
कृष्ण एक बार अक्रूर जी को भेजते हैं कि आप इतने भोग और ऐश्वर्य में विलास है, मेरी जो सो बुआ बुआ आपके पास आई भी है, उनके पति नहीं है और उनके बच्चों को आप कभी कभी बहुत कड़क बोल देते हो, ठीक नहीं लगता है। तो बोलते हैं मैं जानता हूँ कृष्ण की वाणी है, ये वाणी को मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता बिकॉज मैं अपने पुत्र के मोह के प्रति अंधा हूं, है ना। सो अटैचमेंट इतना इतना डीप हो जाता है कि व्यक्ति रिलेशनशिप में भी अपना अपना फायदा देखता है ना। और शुरुआत भगवत गीता की ऐसी ही हुई थी इधर। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज 2.45। So, Prabhu, can I यस यस heard the video? Because I wasn't there last week. I think for me, see, it's a journey which we have all started. So I'm trying to just give you some personal things. See, I think, yes, you're getting on a journey. ये जन्म में होगा वो सब, at least it is starting in this way. Start to understand what is holding you back. That connection you said, no, the person is not able to keep the mind in rain. Yes, yes, yes. So that will come through. Maybe I'm just saying this is the step one. I think first you need to know what's not working. Yeah. And I think so. For me, it was more a introspective thing. I mean, ye jo, for everybody, Prabhu, everybody who has to come to that resolute determination, it's introspection for everybody. And I think this example that you gave of the Dhritarashtra, this Akrura, where that's very relevant because I think we all kind of know the concept ki kahan jana hai, but you know there is something, there's some anchor, something that is just not letting you move. That anchor will come today. Yeah, and I'm just saying, no, I'm just explaining that, you know, this is the, I think maybe you have to make a baby step. Yes, exactly, exactly. This sloka was maybe not even a baby step, it was like a molecular step that's been taken in terms of, I think, self-awareness, which might be the trigger for hopefully, acceleration towards the other thing. Good, Prabhu. Very nice. Everyone has to, because, you know, when we are going through this phase of Gita, everyone should get that baby steps towards single-pointed consciousness, from multi-branched consciousness to single-pointed consciousness. So these are the biggest drawbacks which comes when you start a journey. These are the biggest drawbacks which comes, like, you know, all those 5 types of situations given by those 5 types of people, and those, you know, 4 types of flowery birds and all those given in the Vedas. And in that, the last one, Bhog Aishwarya Gatim Prati, where Bhog Aishwarya you get too much attached, because that is where maximum life people जीते किसके लिए, खाने पीने के लिए, मजे करने के लिए, और वो नहीं करेंगे तो फायदा क्या. So, you know, people, that is, and these are the roadblocks which will stop you towards going towards single point focused determination. So today again, going forward with the same journey, trai-guṇya-viṣayā vedā, nistrai-guṇyo bhavārjuna, nirdvandvo nitya-sattva-stho, niryoga-kṣema ātmavān. So वेदों में मुख्यतः 3 प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है. हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर हटो. समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण रहो. So we start discussing trai-guṇya. Trai-guṇya is 3 modes of nature, right? 3 modes of nature. Trai-guṇya-viṣayā vedā. Viṣayā vedā means are the topics of the Vedas. 3 modes of the nature are the topic of Vedas. Viṣayā vedā. So mostly Vedas talk about this 3 modes of material nature. Next line he says is nistrai-guṇyo bhavārjuna. So Arjuna, you have to go beyond these 3 modes. You have to go beyond these 3 modes. And not only go beyond 3 modes, become nirdvandvo. Become nirdvandvo. Probably if you remember, when we came to the changing point of Bhagavad Gita, we came across the same duality concept. Right? So become nirdvandvo. Be situated in, beyond dualities. ये सुख दुख है ना, पहले तो बोल रहे थे सब सहन करना पड़ेगा, बाद में एकदम जब गेयर चेंजिंग पॉइंट आया था भगवद गीता, वेयर निष्काम कर्म स्टार्ट्स, that is where Krishna says you have to have samabhav, right? So that is where 2.38 नहीं 2.38 just 38. So आपको संभाव दिखाना पड़ेगा. Same thing, nirdvandvo, be situated beyond dualities. So what is this? Dualities are created by what? Created by this 3 modes. That is what we'll understand. So nirdvandvo, then become nitya-sattva-stho. Nitya-sattva-stho means be constantly situated in goodness mode. है ना?
सतोगुण में रहो कॉन्स्टेंटली. niryoga-kṣema ātmavān. niryoga-kṣema, free from anxieties and gains or protection. Become free from anxieties and gain or protection. Anxiety of gains or protection. बोलते लाभ और रक्षा से रहित, किसी भी प्रकार के लाभ तथा रक्षा से रहित. Become ātmavān, be possessive of the self. Okay, this is the English translation in terms of meaning. So, Krishna is continuing his analysis on how Arjuna should act on the level of Buddhi Yoga. How Arjuna should act on the Buddhi Yoga. He already said about which people cannot act on the single pointed consciousness. 42, 43 already said, these kinds of people are there, and do not get carried away by the flowery words of the Vedas, yamimam pushpitam vacham. And also he said, do not get too much attached to this bhoga and aishwarya, bhoga और aishwarya के प्रति है ना, आप बहुत ज्यादा ये मत करो अपने consciousness. We forgot the important point. By attachment, what happened? Our consciousness gets abducted. That's very, very important. Like, and we took the example of bees and, house flies and all those coming into, and our consciousness getting abducted. So we are into something, but this makhi ko bhagane mein lag jate hai. So do not fall into this flowery words of the Vedas, and do not get your consciousness abducted by this by getting too much attached to bhoga and aishwarya. So this was this 2.4, 2.43 and 4.4, right? So naturally, one may ask question, and in fact, our Anna had already asked this question, right? Shruti and Smriti, right? You had already asked last time also when it started. So the same question was in Arjuna's mind. तुमने बोला भी वेद भी तुम नहीं बोले हैं, मतलब like आगे ठीक है. Anna said वेद भी कृष्णा नहीं बोले हैं, और फिर आप वेदों को negate कर रहे हैं. What is that meaning? So same thing, Arjuna also had that same kind of question in his mind. Vedas are meant to be like a guidebooks for humanity, right? Vedas are like supposed to be guidebooks for an humanity. And how can one not follow the same? And how can one ignore the same? Rather, here Krishna is asking to ignore, right? So if you have to get the single pointed focused determination, he says you have to ignore this. So Arjuna was also in the same dilemma like you were. The moment you listen, you get into. So, but here Arjuna's, when Krishna says, then Arjuna will think. So that is where. So he doesn't, we are not listening live. So sometimes it comes to us in the after class. So Krishna is also a Bhavagari Janardhan. He understood Arjuna's mind, like, what he is coming from, how one can ignore the Vedas. So then he gives a solution today, like, he gives solution and he takes so important words. There are total 6 important words taken. So we need to understand all those 6 important words, this entire thing about her. So we'll analyze all this word by word, one, and then we will come to some conclusion. Okay. So before that, let me tell you, first time explicitly Krishna has mentioned about 3 gunas. Chapter 1 to chapter 2, all the shlokas, first time he is talking about 3 gunas, Satogun, Rajogun, Tamogun. In fact, going forward, you will find one or 2 chapters full on gunas only. What is that? Guṇatraya-viṣayā nama chaturdaso adhyaya, 14th adhyaya, full of gunas only. And Shraddhataya-viṣayā nama saptadasho adhyaya, that is also full of gunas only. That is also description on full of gunas, prakriti. And also the 18th chapter, first shlokas, quite a few shlokas. In detail, 3 gunas will come. And of course, in between many places. So this 3 modes of material nature will also be spoken by Krishna. So we will discuss, elaborate in detail when it comes from time to time. Okay. But today, essentially what you have to understand here, when this word 3 gunas has come, so one has to understand something. So what should you understand, take home today? So now these 3 modes are nothing but the building blocks of material nature or building blocks of a matter. है ना, बिल्डिंग के ब्लॉक आप समझते हो, पत्थर, सीमेंट और ईंट बना के एक ब्लॉक बना देते हैं और वो ब्लॉक को जोड़ के मकान भी बना देते हैं ना. तो these 3 modes are the building blocks of a matter. Okay. And also this is a force that these 3 modes are the force that keeps the soul within this matter.
ये तीनों गुण एक ऐसा फोर्स भी है जो सोल को मैटर में बांधे रखता है ना। प्रकृति के तीनों गुणों के बाद में ये 8 तत्वों से बनी हुई प्रकृति, उसके अंदर ये सोल है जो कि इस प्रकृति का तत्व नहीं है ना। इट इज सुना ये इटर्नल। सो वी आर डिस्कस्ड ऑन। सो ये उसको उस चीज को बांध के रखता है। तो ये तीनों गुणों को शक्तियों, ये शक्ति है जो आत्मा और पदार्थ को भीतर में समाये रखता है। सो ये उसका बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड विल डिस्कस मच 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 मोर डिटेल, डोंट वरी, कि आज ही थोड़ा बहुत करेंगे। And also, with the end of this shloka, you will also come to know this shloka and next shloka, Krishna also touch bases, and in fact, in third chapter, he gives final conclusion, but he touch bases upon the fourth reason. What was the fourth reason? Kulakshaya, na? Family traditions. Family traditions getting vanquished, right? Family traditions. Who will be there to explain the family traditions? So we will touch base upon that also. This and the next shloka, and also in third chapter it will come through. So we don't have to touch base. I mean, it's like, or it's only when you understand these 6 terms, you will come to know automatically what does Krishna want to say. So we'll understand one by one. Trai-guṇya-viṣayā vedā. This is the first term, right? So he's saying trai-guṇya-viṣayā vedā. So Vedas talk about mostly 3 gunas. As I said, this 3 gunas is the building blocks of material nature. Example, I'll take off a TV only. TV, when you see, what happens? Essentially, there are 3 colors in a TV tube. Engineers will say, I don't know. Primary, 3 colors. They call it as RGB or RYB, depending on this thing. Engineers बताएंगे, मेरे को पता नहीं, मैंने तो खाली सुना है इस कॉल में. तो RGB is red, green and blue, or red, yellow and blue. So some terminology they use RGB and some terminology they use RYB, and these 3 colors produce secondary colors. And and the difference between RGB and RYJ is that one is the emitting light, one is the emitting vision, and the other is the printing of pixels. So probably he has gone there, printer, so he will know. But one term RYB is used in terms of printing technology, and RGB is used in terms of emitting technology, relay and all those. So these combined together, they produce different colors, different forms, and different interaction between. When you see the TV, there is a program going on. So this 3 colors basically out of the tube combine, intermix and provide you different colors and motions and everything, where you can understand things. Similarly, what happens is, this material level Prakriti also has this 3 basic primary modes, which is Sattva-gun, Rajo-gun and Tamo-gun, which we call it as mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. So these are the English and Hindi names. So these 3, with various permutations and combinations and intensities. कभी-कभी होता है ना, green ज़्यादा मिलाने से ये कलर आता है, blue ज़्यादा मिलाने से ये कलर आता है, तो technically वो जानते हैं. But so these gunas with the combinations and the intensities of 3 modes produce innumerable resultant components. Okay, you can see calculus ka formula NCN. I know how many of you are math students here. So I did it only during CA intermediate. I knew that terminology only during CA intermediate. And CN is getting many combinations, permutations and combinations. So those many matters gets produced. So it depends on that constant, what is there, and based on that, what are the probabilities which come out. So there are many components which produced. So not only innumerable components, but also it acts as a subtle force. I said it's a force also which binds the matter, the soul with the matter. So it also there's a subtle force that shape the interaction between the consciousness and matter. So ये building block, no doubt, they are the basic blocks of this material nature. मतलब कि कुछ इस प्रकार से जोड़ के बनाए गए हैं ताकि वो प्रकृति के साथ साथ अपने आत्मा को भी स्थित रख सकते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को प्रकृति से इंटरैक्ट करने का मौका दे सकते हैं, है ना. तो जैसे हम टीवी से, स्मार्ट टीवी आजकल इंटरैक्ट करते हो आप लोग, है ना, तो वैसे ही सोल और प्रकृति का इंटरैक्शन के लिए ये तीनों गुण बहुत ही कारगर कार्य करते हैं, है ना. So the soul's consciousness is naturally, then what happens, gets affected by this modes.
gets affected by the modes, and accordingly the soul acts in this material world and gets entangled. Because Srila Prabhupada ने क्या लिखा starting में कि every this thing would cause action and reaction, है ना. सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं निहित होती है. So you do any act and there is a reaction, and this way you get entangled. So it's like this is very common. So how you get entangled? So you get attracted to something. Okay, you get attracted to something because that's what, you don't get attracted to Bhoga and Aishwarya, it was said before. But the blocks of the nature are such that you get attracted either to certain things in the mode of passion, Rajogun mein, just you get attracted, you like this so much and you get attracted due to passion, Rajogun se. Or you become passive and lethargic, want to sleep due to mode of ignorance becoming active. Or you become thoughtful or introspective. अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा करना, आज तो प्रभु भी है और प्रकृति का श्लोक तीनों गुणों का हरि बोल तो अच्छा रहेगा क्लास. तो कृष्ण, so something like introspective if you become, then sattva-gun, right? So this again something which we will discuss later, because getting up of all these modes and discussing into the various things we'll discuss. But the essential is Krishna is saying Vedas talk about this 3 modes of material nature. So all the material activities or exchanges involve action reaction, which will cause the bondage, and as a result we have to be aware of this concept trai-guṇya-viṣayā Veda. So no doubt Vedas are meant for a guide for humanity, where it will guide the people on the path of the dharma, right? No doubt about it. Veda, trai-guṇya-viṣayā Veda. So Viṣayā Veda is no doubt which is guiding people on the dharma while we are caught in this material existence, while we are caught in this material world. So guiding people on the path of dharma according to what? According to their nature. According to their nature. And natural nature, it gives, due to that nature, it gives attachment or attraction, and people get directed towards those destinations. Attraction towards destination or attachment towards some destinations, and people get diverted towards those destinations. So Sattva-guni person, if you say, he will adopt this Vedavani, he will adopt this flowery language of the Vedavani and adopt progression in higher planetary system. ठीक है भाई, मैं सतोगुणी व्यक्ति हूं, मैं यहाँ पे ये कार्य कर रहा हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा और वहां पे भी वही कार्य करूंगा, और वो स्वर्ग से फिर महर जाऊंगा, महर से जन जाऊंगा, जन से तप जाऊंगा, तप से सतलोक जाऊंगा ना. आपका क्वेश्चन था प्रभु, सुनील प्रभु लास्ट टाइम. तो ये चीज यहाँ कवर होता है. तो हर 6 प्रकार के स्वर्ग धीरे धीरे व्यक्ति ऊपर उठ सकता है सतोगुणी by taking this Vedavani and following that, and he can go up to the highest level. Okay. Sattva-guni, being in Sattva-gun allows him to do that progression. Do that progression to higher planetary system. And he can go up to Brahmaloka, and also there he can touch base upon the Brahma Jyoti after Brahmaloka, which is kind of moksha. So that is one of the process. And those who are passionate in Rajoguni, what will happen to them? What does a passionate person do? Rajoguni person? Too much work. Huh? Too much work. Too much work for family, too much work for fulfill. fulfill desires of the family, fulfill. So that's what I think. So passionate people aspire good life, good wife, good house. यही होता है? Good wife. Good wife अपने पास एक ही है, ऑप्शन नहीं है. जिनके पास 4 होती हो तो इट्स ओके, दैट्स व्हाट भाई, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा घर मिले, अच्छे बच्चे हो, और वेदवाणी they'll take, they'll enjoy and go according to those directions, and Vedas allows them, right? Vedavani allows that. Shukracharya, for example, he guided Bali Maharaj to Yagya he did after that. First he said, you can acquire heaven, and he acquired heaven. And then he said, but heaven has a qualification. You cannot enjoy that heaven, for which you have to obtain qualification. And that is why that Yagya came in. So, and Ashwamegha Yagya, 100 Ashwamegha Yagya, if you do, you will also become Indra.
But it was God's will, so he was interfering the God's will. So that is where Vaman Avatar had to come, and then Bali Maharaj had to be sent to Sutal Lok. And there also he is enjoying. Sutal Lok has more opulence than Indra, Swarga Loka. So he is still enjoying there. So people who are passionate, it happens. Like, the Vedas give you that option. And people who are in Tamoguna, who are attracted to this wine, a woman, and all those, of course, we had discussed. The Vedavani gives them, of course, the Vedavani gives them the chance to have those also them in the Swarga Loka, but not in that form. They are doing Vikarma. It gives them the chance to rectify themselves by putting some kind of restrictions. मैं रोज पीता हूं लेकिन मंगलवार नहीं पीता हूं. मंगलवार क्यों नहीं पीते हो? मैं रोज नॉनवेज खाता हूं, मंगलवार नहीं खाऊंगा, शनिवार नहीं खाऊंगा. शास्त्रों में दिया हुआ है, कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है. अच्छा, तुमको खाने का लत है तो इस दिन मत खाया करो. अच्छा ठीक है, तो भगवत तुमको स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा. So, of course they are doing vikarma, but that gradually, भाई ऐसा मत करो, बहुत नॉनवेज खाने का मन है, बलि प्रथा भी दी गई है, कामाख्या देवी में होता ही है बलि and all those. So, quite a few things given in the Shastras, tamoguni persons get attracted accordingly. Example, doctor, a person is smoking, a chain smoker, 10 packets a day, doctor will say, no, reduce it to 0. Will he do that? He'll say, no, Baba, 10 is too much. You come down to 3. Then after 1 month, it is still not getting rectified. You come down to 1. So that is what is being Vedas also have given those gradations for different types of people. Some people may take it seriously and leave it on day 1. But everybody may not be able to, because based on these 3 gunas in which they are acting. So this way, Vedavani affects different types of people in different gunas. And Bhagavad Gita 14.18 you can open. That also says the same thing. I'm not talking about Vedas. Bhagavad Gita will also say the same thing. 14.18 you can open. Urdhva gachanti sattva-stha, madhye tishtanti rajasa, adho gachanti tamasa. Jaganya guna vrittistha, adho gachanti tamasa. उसका ट्रांसलेशन भी आप पढ़िए, उसमें वही रहेगा. क्या बोलेंगे कि जो सतोगुणी व्यक्ति है, those situated in the modes of goodness gradually go upward to the higher planets. Yes. Those in the mode of passion live on the earthly planets, and those in the abominable world of ignorance go down to the hellish worlds. Okay, so up or down and middle. So Rajoguni passion person wants to do things, act, enjoy, and come back. Do things, act, and enjoy, and come back. So Bhagavad Gita 9th chapter will say about that giant wheel concept. You are just into this giant wheel, going up and down, up and down, up and down. So this is there. Already Bhagavad Gita also says the same knowledge. That, people, if you are into those modes, then you will certainly, if you are in the goodness mode, you will go on the higher planetary system. 6 स्वर्गलोक जा सकते हैं, और नीचे के 7 पाताल जा सकते हैं अगर तमोगुण में हो. So no doubt, Vedas are spoken by the Supreme Lord himself because they are Shruti and as a source for all the souls to reach back to him after fulfilling their desires. So, Prabhupada, you're saying you're in that state of tamas. How do you get to that in that state? Who puts you there in that state? No, it is first of all, we'll understand going forward because it's a whole story. Like Prakriti itself is also into various stages. Morning, you will find it very prashant, peaceful. After the moment sun rises, you come into this Rajogun, running for office. And night, you are in the Tamogun, you want to sleep, lethargy and everything. So now, that is one. Your body also has that Prakriti. Which mode is active? In the Tamogun, if you are Satogun active, you will take up chanting in the night. In the Satogun, where you have to chant, you want to sleep. Tamogun is active, you will sleep. So these are interactions. Chapter 14 will deal with all these topics. But that is the reason you have to understand they affect us. So we have to be aware of it. And the solution also has been given today. Krishna says about this. This is the problem. Trai-guṇya-viṣayā vedā. This is a problem, 3 modes. So this diagram probably if you have, again, I forgot to share it today. The solution he'll give today. So no doubt Veda is spoken by the Supreme Lord, but the only thing is they have used the word
in the Vedas used is in the form of flowery language. Piyamimam pushpitam vacham, flowery words. So using of flowery words, is it wrong by the Supreme Lord? Everybody, he has to attract all the souls, right? And with that floral decoration, when you do, today I didn't have flowers, I could not go out. I put whatever flowers is available. So something has to look good. So, the floral decorations do attract, right? So again, using of this flowery language, it is an indirect method, of conveying anything. Paroksha bhav. कहते हैं ना, परोक्ष भाव से बताना है किसी को. Indirect method of conveying something which sometimes attracts. So, ये वेदों में इस परोक्ष भाग, that's why you remember, like we spoke about when na iti had come. Everything is first no. That's also one of the bhav in the rejection mode. So Krishna is using by indirect method of conveying in paroksha bhav the message which appears in Vedas, right? So that is what is pushpitam vacha. Whereas when you go deeply or when you study them deeply, you will find that, okay, these three modes of nature are in this way directing everybody, but if you go and study them deeply, then you will find that in the ultimate purpose of what these Vedas have been written in flowery language, the ultimate purpose is to know that Supreme. It will come out, chapter 15, it will anyway come out. Ultimately it is, the purpose of the Vedas is to know the Supreme Personality of Godhead. So that's the conclusion, right? And if one abides by that conclusion, which is also given by the great sages, by acharyas, which acharyas also have spoken about, then one is said to be in the right path. Then one is said to be on the right path of accession. But if you don't do, that is else when I say, okay, else, then you are Vedavada Rata, which is 2.42. Your Rati is in Vedavada. I'll do what is Veda is telling, I'll do and come back and go do, enjoy, come back, do, enjoy, come back. So, or this entire Vedavada has been written for what purpose? To know the Supreme Personality of Godhead. So if you understand that, then you are on the right path. You need to reach to Him. Okay? So the opinions of the sages are also described. That's why Srila Prabhupada has given some description on, Upanishad. And so described in the, Vedas, Puranas, and then, they have also been described in the Vedas, Upanishads, and then also been described by sages in the form of Smriti in the Puranas. And of course, Bhagavad Gita, which comes as a part of Mahabharata, which is Smriti, but again, since it is spoken by the Lord Himself, it is Shruti also. So that is where it becomes more important. In a Smriti, there is a Shruti coming across, and it becomes more important, and it becomes a life manual, and that is why our courts and everybody follow that, right? मैं इसके ऊपर कसम खाता हूँ and all those. So Vyasadeva had also, like he was a sage. So when he was compiling this, he wrote Puranas. And Puranas also for what? He graded them into 18 Puranas he had written, and each 6 of them he graded it for particular type of people who are in particular gunas. So तमोगुण की व्यक्ति के लिए उन्होंने मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण और शिव महापुराण लिखा. Okay, here people go very बरसक. शिवजी तमोगुणी थोड़ी है. अरे शिवजी नहीं है तमोगुणी. शिवजी तमोगुणी में रहने वालों को भी संभालते हैं. ये उनका गुण है. तो ये 6 पुराण तमोगुण व्यक्तियों के लिए लिखा गया. रजोगुणी व्यक्तियों के लिए मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण. ये रजोगुणी व्यक्ति के लिए. पैशन इज बहुत जरूरी. क्रिएशन एंड ऑल दोस काफी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो उसके लिए वो जरूरी है. और सतोगुणी व्यक्तियों के लिए विष्णु पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण. तो ये 6 कैटेगरी करके 18 पुराणों को भी उन्होंने इन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए डिफाइन किया. सो नाउ पीपल आर्ग्यू मेनी ऑफ द टाइम्स. शिव महापुराण में ये कहा गया, विष्णु महापुराण में ये कहा गया. फिर पुराण एक दूसरे से क्यों बात नहीं करते? एक एक कैटेगरी के पीपल के लिए. ओके, एंड नन ऑफ दिस 18 पुराणास
are against the principle of Vedas. One has to understand. None of these 18 Puranas are against the principle of Vedas. They go hand in hand with the Vedic principles. Whatever has been defined in the Vedas, they go hand in hand with the Vedic principles on time, place and circumstance. And what was those time, place? अभी जो कौन सा मनवंतर चल रहा है वही वस्वत मनवंतर चल रहा है. उसके पहले टोटल 14 मनवंतर आते हैं. अलग अलग मनवंतर में अलग अलग प्रकार के व्याख्याएं थी, लेकिन सारे मनवंतरों का ये वेद सारे मनवंतरों में इंपॉर्टेंट थे. कुछ पुराण कुछ मनवंतर के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पुराण दूसरे मनवंतर के लिए इंपॉर्टेंट है. वी डोंट हैव टू फॉल इनटू दैट, बट वेदास आर ऑल दिस. trai-guṇya-viṣayā वेदा इज ऑल दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है. So this is about trai-guṇya-viṣayā Veda. Nistrai-guṇyo bhavārjuna. But Krishna today is instructing us to go beyond this three gunas. Nistrai-guṇyo bhavārjuna. He is asking you, don't remain in this three gunas. So we'll come to those. What three gunas makes problem? Like, when I said, you remember the spiritual element when it forms. We come back to this because this is an important chart for us. That's why I kept one copy always. Where, the moment you see, that when uncontaminated pradhan, when enters Mahat Tattva and then Mahat Tattva, it enters into material realm, first thing contamination starts and, this Prakriti's three gunas appear. All the three modes appear. Three subtle elements. Then after that modes, this false ego, intelligence, mind and all those things come in. So the moment this Prakriti is formed, the modes are the building blocks. So without that, Prakriti will not be formed. That is what I wanted to say. When I said they are the building blocks of material nature. So Krishna is asking today to go beyond this three modes. Become nistrai-guṇyo bhavārjuna. Rise above these three modes. Why to rise above these three modes? Because in these three modes, how do they form? Only when they enter the material realm and contamination process starts. That is where three gunas, three avatars take place, Brahma, Vishnu, Mahesh, and that is what people remain. They are the guna avatars. When the material, within this, when this one Brahmanda starts activating, the below black one which is big, that is where the Brahma, Vishnu, Mahesh ki utpatti hoti hai. Uske pehle there is no, apart from Vishnu, there is nothing before that. And what happens once you start getting once this gunas gets contaminated, three modes appear, and these three modes mainly deal with what? People involved in these three modes will mainly be looking for fruitive activities. Barter system. That's what I said. मेरे को ये काम कर दो तो मेरा ही मिलेगा. मैं ये इतने यज्ञ करूंगा तो मेरे को ये पुण्य मिलेगा. मैं ये दान करूंगा तो मेरे को ये पुण्य मिलेगा. मैं ऐसा अनेक प्रकार. So that is what fruitive results. So you do some action and you expect some kind of fruitive result. Like I go to office, I get salary. That is my fruitive result, right? That is my fruitive result. I go and work. Contamination, what's contaminating what? The contamination is the moment this is the Shuddha, that is what will come today. I'll come again. Shuddha Sattva, this first element which is called Pradhana, that is in the Shuddha Sattva mode. That is, the pure mode. Shuddha Sattva mode. Pure mode we call it as. क्या बोलते हैं उसको? Pure ही बोलते हैं? Pure. So when pure state enters this material realm, the material realm has the three gunas. That pure energy, or you call it as force, when it enters this Prakriti three realms, contamination starts. Like, the moment if milk is getting boiled and just one drop of lemon falls in, then contamination starts, it starts curdling and then, paneer comes out and so many things. So that is where the three gunas appear full-fledged. Like, the three gunas distinctly appear. So the Shuddha Sattva first dilutes to Satogun, and then Satogun more dilutes to Rajogun, and Rajogun more dilutes to Tamogun. That is where when it dilutes to Satogun, Kshirodakshai Vishnu appear. Garbhodakshai Vishnu appears. From Karnodakshai Vishnu, Garbhodakshai appear. And from Garbhodakshai Vishnu, after Rajogun when it appears, Brahma appears on his navel. And these are immediate, don't think that, it takes time. When the creation happens, it happens in seconds only, And then Brahma gets angry, and from the middle of this thing,
crying baby comes out, and that is what is Shiva. And of course, Shiva will have to think about, because it is connected with Sadashiva and all those. Today we'll not dwell into it, but that is what it is. So, nistrai-guṇyo, you have to get above this, he says. So people get involved in fruitive activities, whereas that is not the purpose. Right now we are coming into that stage where we are rejecting karma kanda, because this fruitive activity we already spoke during karma kanda, and now we are coming to a stage where we have to mainly forget that karma kanda, and we have to do which is selfless service, right? So that is where it started. When you have this buddhi yoga, then means you have this straight one-pointed focusedness, then this yoga is possible. So the entire abhideya, there are three terms: sambandha, prayojana, and abhideya. So the entire abhideya is become nistrai-guṇyo. That is, get above this three gunas. So sambandha means, in general terms, I say sambandha means what? Who am I? What is my sambandh? So, I am the soul. Okay, you know the sambandh, and soul, and the soul is the part and parcel of the super soul. So you know your sambandh. So what will you do? I will try to establish my connection with the super soul. That is prayojan. By what means? By all the means mentioned in the Vedas. Okay, different moods, different modes, different yogs, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अलग अलग मेथड से मैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूंगा. दैट इज प्रयोजना. और अंत में क्या पाऊंगा? उस परम सत्य को, उस सत्य को जो अभिधेय है. And that is what should be. You go get out of this three modes. That should be your single point focus. So when we do that, what will happen? Of course, like and this. Why should we do that? For example, why when we do that? No, why should we do that? Because our Atma, we know, is a transcendental thing, right? 11 to 30 shloks we discuss this, right? It is not material, it is spiritual, right? And Atma is spiritual, it is transcendental, not material. Then that Atma, is bound in this, by force is bound in this material body. Okay, so this Atma has to be known well. So if you know that Atma through these three modes, you will always be attached to this material realm. So आत्मा को इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठा बोला गया ताकि उस आत्मा के बारे में बराबर जानकारी हासिल रखनी है. आत्मपरायण बनो. लास्ट में जो है ना, ātmavān, we'll come to that word also. This is all true, so that you become ātmavān. Yeah. So Atma, our goal is to reach back home, back to Godhead. It is transcendental. So for that transcendental, to understand that transcendental thing, you have to become nistrai-guṇyo. आप उस ट्रांसेंडेंटल चीज को समझने के लिए nistrai-guṇyo बोल. So nistrai-guṇyo is not, लेकिन sometimes people say निर्गुणो. निर्गुण का मतलब बोलते हैं ना, कई लोग निर्गुण बोलते हैं. नी का क्या अर्थ होता है? Is it rejection? No, right? Now we understand, right? Ni dhatu is used not for rejection but to disseminate. Where that nirgun only becomes, that nirgun which is shuddha sattva becomes three different gunas. निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि अर्गुण या अनगुण नहीं कहा है. निगेशन ऑफ गुणों नहीं कहा है. गुणों को निगेट नहीं करो बोला है. वह जो गुण है शुद्ध सत्व के रूप में, प्रधान में, उसका ही कंटेमिनेशन होके तीन गुण बने हैं, है ना. मैंने वही बोला, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट दिस, राइट. अभी एक दो श्लोक पहले भी किया था अपन ने. नी किसका? निराकार, है ना. निराकार और साकार के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, राइट. सो अनाकार नाम का शब्द नहीं है. निराकार अर्थात जिससे सारे आकार निकलते हैं. निर्गुण अर्थात वह गुण जिससे सब कुछ गुण निकलते हैं. और उस निस्त्राई-गुण्य को आप प्राप्त करो अर्जुन. So nirgun is decontaminate. Yeah, not decontaminated. Yes, decontaminated good, or the original state of that good, right? Because there is no question of, because दही बन जाता है, दूध का दही बन जाता है, दही को वापस दूध में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना. We cannot do that. So इसीलिए, that is the purest state. We call it as निर्गुण. बिल्कुल क्लियर नहीं था मुझे. क्यों?
किसको किसको निर्गुण होना है और किसको यानी कि नहीं 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 निर्गुण आप होना है? नहीं, नहीं आपको निर्गुण होना नहीं है, आपको उस निर्गुण की अवस्था को प्राप्त करना है। आप नहीं हो सकते निर्गुण। इन तीनों गुणों को छोड़कर आप निस्त्राय-गुण्यों के ऊपर अवस्था को पहुंचो। किसको मतलब वही बताओ, किसको मीन्स आत्मा को क्या? आत्मा को, यस। क्योंकि आत्मा को- आत्मा इन तीनों गुणों के तहत, आगे आएगा माया, आएगा पर्दा एंड ऑल दोस, बट ये तीनों गुणों के तहत कर्म बंधन के फ्रूटिव रिजल्ट्स के कार्य करता है। आप समभाव पे रहोगे तभी तो जाके ना फिर आगे इसलिए बोल रहा है डोंट बी प्रॉफिटेबल मीन्स डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट। ये जो है ना आगे आया है कि भी लाभ से रहित, ये सब चीजें कब हो पाएगी? आत्मा के लेवल पर ही हो पाएगी। शरीर के लेवल पर तो मैं कार्य कर रहा हूं तो मेरे को तो महीने के आखिरी में सैलरी मिलनी है। So nistrai-guṇyo, O Arjuna. So come to that spiritual level and do not lament at this material level. The purpose is gradual elevation to the position of the transcendental plane. So one can go up to that. सॉरी, Hmm. स्पिरिचुअल लेवल पे भी आत्मा को आना है। नहीं, आत्मा तो कॉन्शियसनेस, वही तो बोला ना मैं, मतलब कॉन्शियसनेस इज बाइंडेड। आत्मा की कॉन्शियसनेस को इस तीनों गुणों से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल लेवल पे आना है। आत्मा की कॉन्शियसनेस, यस, वही तो कंटेमिनेट होती है ना माया के तहत, प्रकृति के तहत। this we already discussed in previous. Yeah. That's what it will come out same thing, because that's why even the three gunas have come, because people should not mistake what three gunas could do and all those. Isiliyē I'm just focusing. The shloka I could remember, not exactly there was one line like the person who surrender all the activity to the. Yeah. That is very good, Prabhu. If you surrender that, if you know that, उसको कोई चीज की करने की जरूरत दरकार नहीं है. Actually, all these things are leading to that only. कि कृष्णा आप सब कुछ सरेंडर कर देते हो, आपको पितरों की इसकी उसकी कोई करने की दरकार नहीं होती. Exactly, that is what it is. That is what level. The whole idea is that if we remain at three guns, like we like remain in the same cycle of death and birth. So Yes. we need to go beyond. Exactly. And that beyond is possible only after the 6 Svargas. That is what I'm telling you. Consciousness is the property of Atma. Atma, yes, through which pehchan. Yeah, pehchan. Recognized. So become Satoguni. In Satoguni, you can go to Swarga, right? You can go to Swarga, you can go above also 6 Sargas, but you should remember the timeline, right? आपको आपने जो भी पुण्य किए, खूब दान पुण्य किए, तो आपको 100 साल मिला, तो क्या होगा आपका? स्वर्ग का 6 महीने का एक दिन है, 6 महीने की रात है, 100 साल मिले आपको। तो 360 साल इंटू 360 इज इक्वल टू 1 ईयर। मैं 360 ले रहा हूं इसलिए बिकॉज संसार में 360 डिग्रीज का 360 से लिया हुआ है, अपना 365 1/4 लिया हुआ है, डोंट टेक दैट, 360। सो 1,30,000 रफली 1,29,600 years इज इक्वल टू 1 ईयर, एंड इंटू 100 इज 1,29,60,000 years you will spend in स्वर्गलोका। वहां से और ऊपर आप सतोगुण में ही रहना है आपको, और वहां से और ऊपर जाना है। ओके, 100 साल मिला तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मिनिमम तो ठीक है जो भी मिला, तो वो उसके बाद आपको ऊपर जाना है। उसके अंदर भी आपने वीकेंड में चलो भाई हम नंदन कानन गार्डन घूम के आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? सतोगुण ही रह पाना फिर ऊपर से, है ना? तो सो यू इमेजिन नाउ, लाइक गोइंग देयर ऑल्सो यू विल बी सतोगुणी, इज नॉट बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्रकृति, देयर ऑल्सो प्रकृति इज देयर, द एंटायर ब्रह्मांड प्रकृति इज देयर। सो नंदन गार्डन चले गए तो फिर आपका वही अटैचमेंट वापस आ जाएगा, अगर इफ यू आर प्रोन टू। इफ यू आर नॉट प्रोन टू, कुछ भी नहीं होने का है, ओके, यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस सतोगुण, यू विल रीच अप। ऐसा करते करते यू गो अप टू ब्रह्मलोका ऑल्सो, एंड ब्रह्मलोका 100 years इज हाउ मच इक्वल टू हाउ मेनी years फॉर अस? 311 trillion years। ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन 100 years की है, 311 trillion years। तो सत्वगुणी से मुराद सिर्फ आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी है? हाँ, सत्वगुणी से मुराद आपकी स्पिरिचुअलिटी से, या प्रोग्रेशन के लिए, यस, वो होता वही है। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं, और खाली आपका स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सत्वगुणी से नहीं है, तो फिर रजोगुणी आप तो वापस एंजॉय करके वापस आओगे। सत्वगुणी कहूँ, हाँ। सत्वगुणी मतलब सिर्फ स्पिरिचुअलिटीज है, अच्छे कर्म और ये चीजें नहीं है, या अच्छे कर्म भी इसमें आते हैं? अच्छे कर्म आपको चांस देते हैं, और आप वहां पे भी जाके अच्छे रहो, ये गारंटी आप ले सकते हो अपने आप से। तो आप मतलब जिस वक्त हम भगवत यानी कि गीता जी और बाकी चीजें हम कर रहे हैं, हाँ, उस चीज को हमसे सत्वगुणी कहते हैं, आप कह रहे हैं? नहीं, जब हम भगवत गीता से कनेक्ट होते हैं तो हम ऑलरेडी इमीडिएटली इन तीनों गुणों से परे हुए आते हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं रहता है।
आगे आएगा उसका, चिंता मत करो, अभी आज पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा, थोड़ा बड़ा है। नहीं, थोड़ा समझना हाँ, चाहता था। यह जरूरी है आज, थोड़ा आज क्लास के बाद में आप समझ जाओगे। We expect the result. Fruity result. Sattva guna, you are expecting the result, fruitive result, yes. Yes, there is. And that is where you get Swarga also, no? But then you will come to know that you will have to relinquish that. That is what you do also. You have to relinquish, if not full portion of it. That will come in Gita, accession. So all these years, so you go to Nandankanan garden and then you get 72 hoods or apsaras and then finish. Then again, if you get attached, then gone case. So you'll again come back. So that is the result. Is there any shortcut? 311 trillion rays के अलावा और कोई shortcut है? हरे कृष्ण महामंत्र है ना, बिल्कुल है, भरोसा है। इसीलिए उस गोलोक चार्ट में हरे कृष्ण महामंत्र को शॉर्टकट के रूप में दिखाया गया। आप पास से जाके देखोगे तो दिखेगा। वाई 7.12 ओपन करो। मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ, लेकिन 7.12 ओपन करो। आपके पास नहीं है बुक? हिंदी? अच्छा, आपकी शायद सिंधी आ जाएगी, माता जी ने अगर ऑर्डर। तुम जान लो कि मेरी शक्ति के जरिए सारे गुण जाहिर होते हैं, चाहे वो सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो। एक तरह से मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर उनसे आजाद भी हूँ। आजाद भी हूँ। मैं मादी कुदरत के गुणों के जेर असर नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे मातहत हैं। ठीक है, मेरे पे डिपेंडेंट यस, मेरे गुण कृष्ण पे डिपेंडेंट है, बट कृष्ण गुण पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, और गुण सारे मुझसे प्रकट हुए। ठीक है, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का, इसलिए मैंने बोला था कि जब आप कृष्ण का नाम लेते हो तो क्या होता है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो अभिनत्व नाम नामिनो अभिनत्व नाम नामिनो। इफ यू टेक जस्ट द नेम ऑफ कृष्णा, ओके, नाम चिंतामणि कृष्ण, द नेम ऑफ कृष्णा इज लाइक चिंतामणि। चिंतामणि क्या चीज है? एक एलिमेंट है जिसको लोहे को भी सोना बना देती है ना, पारसमणि बोलते हैं, जैसे चिंतामणि उससे भी स्ट्रॉन्गर है। सॉरी, पारसमणि वो लेवल का है, बट चिंतामणि और उससे ज्यादा ये है कि हर प्रकार के आपके, हाँ, हर प्रकार के आपकी विशेष पूरी कर सकता है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, और वो दिव्य है, चैतन्य रस विग्रह, और रसों के विग्रह वे, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। आप उनका अभिनत्व नाम केवल आप उनका नाम लेने से पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं ना। व्हाट डू वी डू? टेक वाटर। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। आप पुंडरीकाक्षम किसको? कृष्ण के नाम को। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि ही, बाहर और भीतर आप हर प्रकार से प्योर हो जाते हो, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा। But like what we do, like we name the Krishna or chant the name of Krishna for some fruitive activities or fruitive results. Should not. So at the time in which gun we that also Krishna says. There are people who come to me for that. Arthor, Artharthi, Jigyasu, Bhartarshava. He'll say people of such. Okay, that is also fine. 7th chapter में आएगा वो भी प्रॉब्लम नहीं है। लो, वो करते करते आपको आएगा कि भाई आप मेरे को relinquish करना है, वो भाव आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये केवल उनके नाम मात्र लेने से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो यू बिकम ऑटोमेटिकली सिचुएटेड इन निर्गुण, यू बिकम अबव निस्त्राय-गुण्य। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वो शॉर्टकट दिया हुआ है उस गोलोक चार्ट में। ओके, so that is the shortcut way. So we are still in this material world. How we have to get connected to that? So, and how one can become nistrai-guṇyo? Next words only Krishna explains. You become nirdvandvo, nitya-sattva-stho. So third and fourth, total 6 words we said we'll discuss. Nirdvandvo, nitya-sattva-stho. So nirdvandvo means essentially you need to have these two, like nirdvandvo, nitya-sattva-stho. Be situated beyond dualities, and nitya-sattva-stho means be situated in constant goodness mode. Okay. So we'll take one by one. Nirdvandvo. What do you mean by nirdvandvo? Dvandva you know, right? Dvandva is duality.
सो सुख दुख, है ना, रिच पुअर, दिन रात, लाभ हानि, ये सारे द्वंद्व है, राइट? These are dvandva, means dualities. Now if you deeply analyze, these dualities come from where? These dualities come from this material nature. Within these three modes, there is always duality. That is what Krishna wants to say. And he says that's the reason, get out of these three modes. This duality is the particular function of this material world. है ना? द्वैत जो बोलते हैं, ड्युअलिटी. हाँ, अद्वैत. बट ड्युअलिटी होता है कोई भी चीज. हम कब कोई भी चीज ऐसा एक है नहीं बोल सकते. दिन है तो रात भी रहेगी, सुख है तो दुख भी रहेगा. हाँ, तो वैसे. So now this material nature, you will find that, these three modes create this various dualities. Krishna instructs us to, that's the reason, go beyond these dualities. And how that is possible? So if you are chanting Hare Krishna Mahamantra, what will happen? It is a transcendental vibration, right? It will give you that transcendental vibration and you go across those three gunas. That is what, So, like, आपके पास कुछ चीज है कीमती, तो बेशकीमती चीज है तो उसको संभाल के रखते हो कि नहीं रखते हो? अलमारी में छुपा के रखते हो ना. और बाकी कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है कचरे की तरह. सो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये गोलोक का प्रेम धन है. और जिसके पास है वो ट्रेजरवान है, और जिसके पास नहीं है वो निर्धन है. हमने लाइक कार्पण्य दोषो वी सेड, राइट? एनीथिंग विच यू हैव यू डोंट वांट टू गिव, दैट इज, यू बिकम अ माइजर. सो इफ यू आर chanting Hare Krishna Mahamantra, that is the biggest treasure you have. And if you are not chanting, you don't have that treasure. Because Krishna and Krishna's name is non-different. And by taking Krishna's name, we are becoming Shuddha, pure, Shuddha. And Shuddha condition will be always above this three mode. Because that is the Shuddha Sattva which we are speaking about, right? That is what is the Shuddha Sattva. So, you are all here chanting. अभी आप आते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का शुरू में chanting होता है. How many of you are chanting home also, right? That's why I keep telling that, and जिनके पास नहीं है वो माला लेना चाहिए और chanting definitely करना चाहिए. So out of 85 people in our group, around 40 people attend. So they are at least chanting. Okay. Out of so many people in Jeddah, only 85 are connected. They are having it. This treasure. बाकी लोगों को तो वो भी नहीं है. You have the opportunity. So you can become nirdvandvo. 7.28 you open. Krishna says how you will become nirdvandvo. No, you will know. Yeah, Krishna will say, how, it's like, we have to do that. Sorry, we have to do that chanting. And how you will do that chanting? 7.28. आपको चैंटिंग करना है, तभी आप शुद्ध रह पाओगे. और चैंटिंग कब कर पाओगे? गुरु तो ठीक है, वो पढ़ो प्रभु, जोर से पढ़ो. पढ़ रहे हैं. पर्सन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं. संकल्प पूर्वक, right? So persons who have freed themselves from the past sins and who are, doing this punya activities without are freed from all kinds of dualities. हर द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं और डिल्यूशन से भी मुक्त हो सकते हैं और मेरी सेवा में लग सकते हैं. ठीक है. तो वो होंगे कैसे? गुरु के पास जाएंगे, तब गुरु हमको कृष्ण का ये देगा मंत्र, उसको चैंटिंग करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा द्वंद्व से हम मुक्त होंगे और भगवान की पूर्णता से. इस बार का जगन्नाथ यात्रा कितना डिटर्मिनेशन से अपने भक्त ऋषि ने कार्य किया था, कितना डिटर्मिनेशन से, है ना.
मैं सबको धन्यवाद दे रहा था। मैं बोला कि एक एक जने को, मैं बोला इस बार प्रभु आप मृदंग में नहीं थे, हम तो बोला था प्रभु आ गए मृदंग के लिए, लाइक वी आर कृष्णा अरेंजेस हिमसेल्फ अदरवाइज लाइक जगन्नाथ यात्रा, लाइक यू आर थिंकिंग, आई वाज थिंकिंग इन द सेम एंगल दैट प्रभु started doing, I said प्रभु will be there then. That's the whole thing. So Krishna automatically managed his things. So we all missed you, of course, but at the same time, like Krishna had made ways also, and everybody संकल्प लेकर सभी ने कार्य किया सुबह। हाँ, एवरीबडी, शैलेंद्र प्रभु तो इनफैक्ट ऑलराउंडर की तरह हर परचेजिंग में आगे पीछे, और उसके अलावा वहां पर जितने कार्य थे हर एक को, हर एक माताजियों ने सभी ने, बच्चों ने कितनी मेहनत की। हालांकि वो 4 मिनट का नृत्य था, लेकिन वो बार बार देखने का मन करता है। बहुत अच्छी तरह से किया बच्चों ने। इसको मैं तो बोला कि जो जिन लोगों ने पिछले जन्म में नेकियां की, मतलब अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म कितना ही है, अच्छे कर्म तो छोड़ना नहीं है ना प्रभु। और वही मैंने अभी थोड़ा सा और नहीं अच्छे, और उसके आगे भी पढ़ो ना, नेकी की है, और उसके आगे मत रुको ना, आगे भी पढ़ो। और जिनके गुनाह में से उन्होंने पाप अमल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर हाँ, मुकम्मल तौर पे कब तबाह होंगे? 4th चैप्टर में आएगा। तबाह तो नहीं लिखा, लेकिन तबाह कर दिया हाँ वही, भस्मात सात कुरुते अर्जुना, वो लाइन आएगी प्रभु। वो माया के दोहियों से मुक्त हो जाता। हाँ, मतलब ड्युअलिटी से मुक्त हुए थे। अच्छे कर्म करने से ड्युअलिटी से मुक्त हो रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, आप वहां रोको मत। अच्छे कर्म करके जिनके पूरे ये समाप्त हो चुके हैं पाप, अब ये जब इनिशिएशन होता है तो क्या होता है, गुरु आपके सारे पाप ले लेता है। भस्मात सात कुरुते अर्जुना, वो भी बहुत डिस्कशन करेंगे, उस श्लोक पे आएंगे तब हम। तो भस्म कर देता है, और ये आपको मौका मिलता है, इसलिए आपको नया नाम दिया जाता है, नया जीवन दिया जाता है, ताकि आप कृष्ण के नाम से ये कार्य करो। और उसके बाद भी आप पाप करते हो तो ठीक है, मीन्स लाइक यू आर गेटिंग इनटू इट, बट द क्वेश्चन इज प्रिंसिपल्स दिया हुआ है किसके? पढ़ते हैं ना, वो तकलीफ पाते हैं, लेकिन वही है, वो उच्च स्तर पे है, इसलिए वो तकलीफ सहन कर कर भी आप लोगों का उद्धार करते हैं। हर कोई नहीं ले सकता एक दूसरे के पाप। यस, तो गुरु उतने ऑस्टर करके अपने आप को ऑस्टेरिटी से मेंटेन करना पड़ता है। जब तक हमारा जो है पैरालाइज्ड है, उसके बावजूद आप उनकी दिनचर्या देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि वेदर ही इज ऑन दिस मटेरियल प्लेन। इतने क्लासेस, इतने एक्टिविटीज, डायलिसिस चालू रहता है, उसके बावजूद निर्द्वंद्व। तकलीफें आप लोगों की लेते हो, आप लोगों की तकलीफें लेते हैं डिसाइपल्स की, ताकि आप लोग आगे बढ़ो। उनको उनके गुरु संभालेंगे, दैट्स ए होल दिस, अल्टीमेटली तो कृष्ण संभालेंगे। ये कनेक्शन होता है, एवं परंपरा, वो परंपरा चलेगी तभी होगा। ठीक है, सो लाइक वापस उस टीवी का एग्जांपल लेता हूँ, RGB RYBB है ना, साला खत्म करते हैं इसको, इस टॉपिक को। तो यदि आप उसके अंदर देख पा रहे हो कलर टीवी, तो आपको कितना आनंद होता है। और वही अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखा दिया जाए आज के जमाने में, वो जमाने में तो वो भी एंजॉय करते थे, तो आपको क्या होगा, हॉरिफाइड हो जाओगे आप, ये क्या है। और ब्लैक एंड व्हाइट बनाना इतना आसान भी नहीं था उस जमाने में। जब बनती थी उसको रील को कलर करना पड़ता था, पेंट करना पड़ता था, बालों को ब्लैक करना पड़ता था, अदरवाइज दिखता नहीं था ब्लैक, है ना। व्हाइट व्हाइट चेहरा दिखता था, व्हाइट व्हाइट बाल दिखते थे, तो ब्लैक करना पड़ता था, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। इट वॉज नॉट दैट इजी। ओके, सो आप वो अवस्था और एक कलर ब्लाइंड वाले की व्यवस्था, इफ यू नो ए पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड एंड दिस कलरफुल टीवी इज देयर, डज इट मेक एनी डिफरेंस टू हिम? विल इट मेक एनी डिफरेंस? टू कलर ब्लाइंड है, उसको तो वैसे ही कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ही विल नाइदर बी गेट हॉरिफाइड और ही विल नाइदर गेट डिलाइटेड, right? Because he is at a different level. So when you become nirdvandvo, similar is the situation when you become, you will not become blind, don't take it that literally. Nirdvandvo meaning is when you take it in this way, the when you go beyond these three modes, the pattern of responses to various things are transcendental, that you are on a different plane. अब ये सेम प्रसाद, हमने खाना अलग बात है, प्रसाद के रूप में खाना एक अलग बात है। इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल, सो यू बिकम निर्द्वंद्व इन दिस केस। सो निर्द्वंद्व इज गोइंग बियॉन्ड ड्युअलिटीज ऑफ दिस 3 मोड्स एंड नित्य-सत्व-स्थ, देन कांस्टेंट गुडनेस। कैन यू बी इन कांस्टेंट गुडनेस? इस मटेरियल वर्ल्ड में वी कैन नॉट बी इन कांस्टेंट गुडनेस।
कुछ झगड़ा देख लिया, दो दो तीन बार देख लिया, ये देख लिया और अपना भी दिमाग घूम गया, उसको वापस दो चार पीट दिया ना. सो यू कैन नॉट बी इन कांस्टेंट गुडनेस. इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर भी कांस्टेंट गुडनेस में रहना कोई जरूरी नहीं है. अर्जुन कांस्टेंट गुडनेस में रहना चाह रहा था, उसने उर्वशी को माता कह दिया तो उसको श्राप मिल गया. तो कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं हो, सामने वाला रजोगुण तमोगुण में हो सकता है, तो आप भी उसके साथ साथ संसर्ग में हो. दैट इज वेयर कंटेमिनेशन हैपेंस. तो you cannot be in constant goodness. So all the modes, what happens, they compete with each other in this world. All the modes compete with each other, and in that competition they contaminate, they compete and they contaminate. Like, we want to sleep in the time of satogun, compete and contaminate, wasting our time. Like, so uncontaminated pradhan, which is shuddha, enters matata. I already said this point, so I don't have to tell you. So this is where exactly the nitya-sattva-stho means that, you have to situate it in a goodness, so that you have to rise above this three, and shuddha sattva is not possible in this three modes. You have to be above this three modes. So eternal. That's why we are nitya-sattva-stho. Nitya means eternal. Sattva-stho means goodness. Eternal goodness is what? Eternal goodness is nothing but the energy of, again, कृष्णा, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना कृष्णा की एक शक्ति है वह राधा रानी, जिसको बोलते हैं ना इटर्नल कंसोर्ट. शुद्ध सत्व, इट्स अ पोटेंसी ऑफ कृष्णा. That is possible only on the transcendental level. So that nitya sattva-stho will not be possible in this material world where there is competition. That is why Krishna is saying nistrai-guṇyo, get up to your consciousness to the level of above these three gunas. And he doesn't stop there. He says two more words: niryoga-kṣema, ātmavān. Oh God, Krishna, this is a big topic, though. But it's okay. We'll complete. Okay, 15-20 minutes we'll complete. Niryoga-kṣema, ātmavān. Niryoga-kṣema, ātmavān. These are niryoga-kṣema means what? Yoga means what? To connect, right? अब निर्योग का क्या मतलब हो गया? Okay, like, mobile is connected to electricity through the charger. So the yoga is through the charger, right? So yoga can mean whatever is there with you, like, which is connecting two things. And kshema is nothing but protection. Kshema means protection. Yoga-kṣemam vahamyam 9.22. आप आगे चल के इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ये कि आप हमको ये दो और हम आपका टेक केयर करेंगे. योगा-kṣemam vahamyam. So Krishna is also saying here, Krishna is not saying yoga-kṣemam, but he is saying niryoga-kṣema. niryoga-kṣema, वह योग जिसमें सभी प्रकार के योग है. So you don't have to worry about that, Krishna says. You don't have to worry about that. That how will you get above these three modes? How will you go above these three modes? You don't have to worry about this. You don't have to worry about this. He says, just don't bother about that. Don't bother about that. Rather, just protect what you have. आपके पास जो चीज नहीं है, योग नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, चिंता मत करो. जो है उसको पहले प्रोटेक्ट करो. जो चीज है आपके पास उसको प्रोटेक्ट करो. तो कह रहा दोनों से बरी हो जाओ, या दोनों को छोड़ दो. मतलब वो ये हाँ, नहीं पहले डोंट थिंक हाउ विल आई गेट टू दोस. डोंट बॉदर, रादर जस्ट प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव, राइट. और निर्योगा-kṣemam vahamyam में वहां पे ये बोलते हैं, और यहाँ पे वो निर्योगा-kṣemam बोल रहे हैं. दोनों से परे हो जाओ. सो इफ यू डोंट प्रोटेक्ट, अभी एक बात आती है कि अब नाउ इफ यू डोंट प्रोटेक्ट if you protect what you have, then Krishna will provide you what you lack, right? That is what is said there कि तू योगा-kṣemam vahamyam, मैं आपको प्रदान करूंगा. So what he will provide that? If you have what is not there with you, don't worry about it. What is there, you just take care of it. What you are lacking, I will provide. पैसे प्रोवाइड करेंगे कृष्णा. क्या प्रोवाइड करेंगे? बातें तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करेंगे. बात वो बोलेंगे पैसे देने वाले भी आते हैं, लेकिन बात वहां पे होती है, भक्ति की बात होती है कि आप भक्ति प्रोवाइड करेंगे. आप निर्योगा-kṣema के हिसाब से आप रहो तो आपको
वो प्रोवाइड करेंगे। होता है कि नेसेसिटी चीज ओनली आपकी नीड्स पूरी करेंगे, विच इज रिक्वायर्ड फॉर भक्ति। यू विल गेट क्लैरिफाइड इन दैट 9th चैप्टर देयर। आपको मजे करने के लिए नहीं देंगे। ये सारी चीजें भगवान टेक केयर करेंगे, आपको उस चीज की पर्टिकुलर। अब जगन्नाथ यात्रा करनी थी, 10,000 का खर्चा है, आप ही लोगों ने किया, सारे भक्तों ने भर के किया ना। लास्ट टाइम मैंने बोला था सब लोगों को कि इतना खर्चा हुआ था, सभी भक्तों ने मिलकर पूरा किया। हम कभी लॉस में नहीं है, हम उल्टा प्रॉफिट में है। तो उसके लिए भगवान प्रोवाइड करेंगे। आपको मौज मस्ती करना है, अलग है आपकी भाव वो है, तो कॉन्शियसनेस में आप वापस मटेरियल पे ला रहे हो। ये निर्योग के मटेरियल, निर्योग के बात पे नहीं आ रहे हो। और लास्ट वर्ड है आत्मवान। आत्मवान बनो, आत्मपरायण बनो। बहुत इंपॉर्टेंट है। वान का मतलब क्या होता है? पोजेसर, राइट। धनवान, धन का प्रोसेसर है ना। भाग्यवान, भाग्य का प्रोसेसर। आत्मवान, आत्मा का पोजेसर। हाउ, नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन वी पोजेस आवर सेल्स? हम आत्मा है, हाउ कैन वी पोजेस आवर सेल्स? इट लुक्स ऑड, राइट? सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? सही है नहीं है? खुद को पोजेस करना है तो कैसे समझेंगे इस चीज को? Be free from dualities and through fruitive activity. No, I understood. That is okay. That is situation. But what do you mean by possessing yourself? आप अपने आप को पोजेस करो मतलब क्या होता है? To know who मैं बंगला पोजेस करता हूं, समझ में आता है। आत्मा को पोजेस करो। to know who am I. Yeah, exactly. To know who am I. Atmavan means possession of Atma, and one has to be aware of that spiritual identity. है ना? One has to be aware of that spiritual identity. That is our real wealth. We have to hold on to that soul. We have to hold on to that spiritual awareness. We have to hold on to that knowledge that I am the soul and that I am the real, and that I have the real life of at a level which is beyond this 3 modes, which is spiritual life. You have to hold to that. And once you hold to that, and you should not let any material ups and downs disposes you of this spiritual awareness. That is where you become nirvandvo and you become niryoga-kṣema Atma. So we'll come, means you will all become, means like, when say you all will become ātmavān, means you should know you are the Atma, Ansh of a Paramatma, and you have to make yourself available for the service of Paramatma. Krishna will demand going forward that do this for me, do pranam for me, do this, and then why should you not practice Krishna consciousness, which is actually being Atmavan. So if you think that, last, it is, last slok of, मैं जाते आते मैं आत्मवान होऊंगा, नहीं होगा. Right from the beginning you have to start becoming आत्मवान. कृष्णा ने आखिरी में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं जब आत्मवान होऊंगा, नहीं, अभी से. और अर्जुना कह के बुलाया इस बार इस श्लोक में, राइट? ओ अर्जुना. So what do you meaning of Arjuna? Till now we heard so many meanings of different names till now, but Arjuna we did not hear, or we heard. Did it come before? I was not sure. हाँ. सेकंड शायद वो मैंने बाकी कौन थे ये सबका मीनिंग दिया, अर्जुना का मीनिंग दिया नहीं दिया, आई डोंट नो. हाँ, डिड नॉट गिव. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जुना? जागृत तो शरणागति है, जागृत. नो ठीक है, शरणागति उसका. हाँ, दैट्स ओके, दैट्स फाइन. नो, बट that's there. Yeah, that is there. That is also, but then okay. जीत को अर्जित करते हैं. Okay. nistrai-guṇyo. No, but here in this context, why is he taking now? That's also more important. Because you are so focused already, so you have to focus on the soul. Okay. No problem. I was looking for one more word answer. That's all correct. I'm not telling no. Arjuna, if you just go through Google meaning, it will say clear, crystal clear, swachh. Crystal clear, Arjuna means. Chamakdar, one which is illumination or something, like
chamakdar, swachh, crystal clear. And that is why you see mostly Arjuna wearing white clothes, like, not to reflect. So sometimes, reflect his character also. Krishna always wearing yellow clothes, reflect his character. So swachh, crystal clear. Such person whose consciousness is crystal clear. Arjuna was already tested of the consciousness. Krishna gave him what? Narayani Sena, or myself without any Shastra. What did he choose? He was crystal clear in his mind. I want Krishna. That's why Krishna is telling, oh Arjuna, your consciousness is so clear, and how are you falling to this material tattva and saying, what will be my, my parampara will get lost if I kill everybody? Your parampara is only one, Baba. You are crystal clear. Your consciousness is one. Reach to the Supreme. All this parampara, family traditions, everything which will come through is only because of this body. This body is lost. All the traditions and everything with this body connected gets lost. उसके बाद जो होना होएगा बात की बात है, but everything is related to this body. Your body is no more. Your all these relationships are no more. So you don't think that, what will be my tradition, family traditions will vanquish, irreligion will come in, women will become polluted. Okay, those are after effects. But what is your consciousness is crystal clear that you are only that eternal supreme's part and parcel. So that is why, ultimately, so in this way, he's started dismantling even that fourth reason. Okay, next shloka, and then third chapter, he'll clearly say, ये relationship छोड़ो, ये तुम्हारे परंपरा, एक ही परंपरा होती है, which is parampara by the Lord to the disciple. So the summary today, Vedic Karma Kanda, Krishna tells Arjuna to rise above this materialistic proportions, because by being in this material world, this material three gunas, you are bound to have karma bandhana. So in order to be free from that karma bandhana, you have to go about that three modes, and to go about that three modes, you have to be free from all anxieties of all, all dualities, all anxieties of gains and safeties. Okay, and be established in the self. Okay. And he provokes Arjuna that, this karma kandi rituals where you are thinking that you will go and enjoy this Svarga, these are all of no use. Rather, you will have to, you should have only one tradition. You think of, you call your family traditions and everything. So, there is only one tradition in this thing, and that is, this, which is, you should have samabhav towards everybody, and which will happen only in the Shuddha Sattva stage, which will not happen in this three guna stage. So from family traditions will all get done with this body. Nothing else will be there. So you have to become nistrai-guṇyo. So how to become that nistrai-guṇyo and all those, that is, where then he will give, in the next shloka, I will give some example that, there is he'll take the example of a sweet water well and a sweet water lake. How does it serve? So, how, essence of Vedas is again connected to Vedas only, because from Veda Vadarata, you have to become Nirveda. So, so the essence of Vedas, if you he considers, he collates it with the well and collates himself as Shuddha Sattva with the lake, or the shore, the sea. So if that is available, then why one has to dig a well? People do so much of activity. So धीरे धीरे आपको concept clear होगा. But since I think so now Bhagavad Gita classes, most of you are all going. So we may discontinue our Bhagavad Gita classes and we'll continue with Krishna classes. Okay, there is Krishna classes which will continue, but we'll discontinue this because it's a trend which everybody wants to hear. And maybe if we continue doing, but then, people's this thing is lost. Once they are in India, the consciousness is fully in three gunas. Or Pakistan also. People will be in all three gunas. So once you come back after the three gunas back to the, so, your nistrai-guṇyo, then we will discuss. Hare Krishna, किसी का कोई doubt है?
अभी अभी कोई डाउट रह गया तो आप बताना। हरी बोल। यस। जैसे हम स्टार्टिंग में भगवद गीता में ऐसा समझा हम लोगों ने कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। यस। तो अपूर्ण इंद्रियों से ये सब चीजें संपूर्ण रूप से कैसे समझी जा सकती हैं? ये प्रकृति की तीन गुणों से इंद्रियों से समझने का ही नहीं, इसीलिए लेकिन इंद्रियों को, हमारी हाँ, इंद्रियों को लगाने का है सुप्रीम केस में, तभी वो शुद्ध हो सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। सर्विस सर्विस है ना, भगवान की सर्विस में लगाओ। इंद्रियों को, सारों को भगवान की सर्विस में लगाओगे तो इंद्रिया शुद्ध होगी। हर चीज को भगवान से कनेक्ट करेंगे। हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं? शुद्ध होने के लिए ही करते हैं। हमारे हृदय के कलमश सारे दूर होने के लिए ही करते हैं। तो हर चीज को जब आप कृष्ण से कनेक्ट करोगे, आपके इंद्रियों को, आपके मन को, आपके इंटेलिजेंस को, आत्मा तो फिर शुद्ध है ही है। मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र इसीलिए मैं बोलता हूं, और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए वेद पढ़ो, और अहंकार को शुद्ध करने के लिए वैष्णव सेवा, उससे ही शुद्ध होता है। इसलिए वैष्णव को आते हैं तो हम लोग पहले सेवा करने का मौका ढूंढते हैं, बट लाइक वो अलग बात है। वैष्णव का अभी ये दिनों में वीजा के चक्कर में इस बार आना नहीं हुआ। तो वो आप आप सभी लोग वैष्णव हो, चिंता मत करो। आपकी सेवा हो रही है, हमारी सेवा हो रही है, आप हम सब भी वैष्णव ही है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र कार्य कर रहे हैं, बट वी आर नॉट दैट, में से ब्रह्मास्त्र है। वी आर नॉट दैट प्योर। इसीलिए फर्क पड़ता है, कोई प्योर आदमी बोलता है और कोई नॉर्मल आदमी बोलता है, बहुत फर्क पड़ता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।